नमस्कार और कैसे हैं आप सब? Well, I'm Rashi and I'm all set आपके tarot predictions के साथ for the month of May. And मेरे पास दो पैक ऑफ कार्ड्स हैं. वन इज़ द zen पैक ऑफ कार्ड्स. ये आपको गाइडेंस देते हैं स्टेप बाय स्टेप एज टू हम कौन सा स्टेप लें टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. एंड अनदर पैक जिससे हम आपका प्रिडिक्शन करते हैं. कार्ड्स दे टेल यू, यू नो, दे foretell things, you know, which are there lined up for you in future. So, very first of all, dear Arians, and let's check out what your cards say, dear Arians. Well, I pick up 3 cards for you, dear Arians. Well, you've drawn one, moment to moment. Your second card is that of playfulness. I'll show you. This is moment to moment, then this is playfulness, right? And your third card that I pick up is slowing down, right? तो ये है आपका टैरो गाइडेंस, डियर एरियंस, कि सबसे पहले मोमेंट टू मोमेंट आप एक काम एक वक्त में करिए और काम को एकदम से इकट्ठा मत करिए, ठीक है? कि चाहे वो थॉट हो, कोई वर्क हो, कमिटमेंट हो, प्रॉमिसेस हो, डेडलाइंस हो. सो मोमेंट टू मोमेंट विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू रीच योर गोल एंड टारगेट्स. दैट इज़ वन. सेकेंड, जो आपकी एक इनर चाइल्ड लाइक स्पिरिट है प्लेफुलनेस की, उसको आप मेंटेन करिए, एकदम से सीरियस मत हो जाइए. एंड ऑफ कोर्स स्लो डाउन, यू नो, स्लो डाउन. I know your energy levels are very high. You know, you get passionate very quickly. You are full of vibrance, and you know, लेकिन you know, your temperament it swings from extreme to extreme, right? या तो बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत हैप्पी हो जाएंगे. So it's just asking you to slow down. Now let's check out what your cards say. What's your how May is going to be. वैसे 2019 की अगर हम बात करें तो आई होप आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये साल बहुत ही क्लैरिटी का है. जैसे कि एक ग्लास में पानी है और मड है, तो जब उसमें मड होता है तो हमें सफ़ेद पानी नहीं दिखता, हमको लगता है पूरा पानी ख़राब है. लेकिन अगर हम उसे कुछ देर छोड़ दें तो पूरा डेस्ट सेटल कर जाएगा और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर आएगा. तो बेसिकली 2019 ये जो ईयर है, अगर आपने देखा हो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एंड इवन 1st of May जो बीता है, इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द क्लैरिटी, राइट? यानी कि जैसे हम जिसको बोलते हैं कॉलिंग स्पेड इज स्पेड, है ना, दूध का दूध, पानी का पानी. तो ये वो क्लैरिटी है, चाहे रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस हों, सोशल कंडीशंस हों, वॉट एवर इट इज़. सो दैट्स वन थिंग. फाइन, दैट वाज वन थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू. नाउ एरीज, लेट्स चेक आउट व्हाट योर cards predict for the month of May, right? And your cards are, you've drawn 2 of Pentacles, that one card. Then you have drawn the second card, 4 of Cups, right? And one more card I'll pick up for you, and this card is the Sun, राइट? तो अगर हम आपके प्रिडिक्शन की बात करें तो जो ये मंथ है, ये बैलेंस मंथ जाने वाला है. पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है, और 2 सोर्सेज से आ रहा है. जहाँ इन्वेस्ट किया था 2 सोर्सेज से आ रहा है. कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है आपके सामने, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो ठीक है, इट्स गुड. बट कार्ड्स ही कहते हैं कि कोई न्यू प्रॉस्पेक्ट है जो अच्छा है, जो आपके लिए ब्राइट होप्स लेकर आ रहा है. तो एक बार उसको आप तवज्जो ज़रूर दीजिए. शादी का भी सीज़न है, तो गुड न्यूज़ है इन द फैमिली, यू नो. बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट. अगर एडमिशन का चिंता हो रही है तो वो भी डेफिनेटली होगा. हेल्थ वाइज दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी नाइस, बट येस, अगेन द कार्ड ऑफ टेम्परेंस विच सेज एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है. वही एडवाइस आपको zen cards भी दे रहे थे. All in all, wonderful what you call month for you, but the number is 5 that you have drawn, you know, so it would be a kind of a 50-50 month, like win-win situation. And don't be sad about anything, don't rush for things, delays will happen, but take it in your stride.
all in all, it's going to be a good month for you, right? Dear Aries, now moving on to the next sun sign, that is dear Taurans. And let's check out what your cards say, dear Taurans. So first of all, the guidance of the cards, right? The Zen Tarot guidance of the cards. And let's check out what your cards say, dear Taurans. Dear Taurans, you have drawn the card of the Creator. Well, you have drawn the Source card and you have drawn past lives. तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, अगर हम आपको दिखाएं तो इस सोर्स कार्ड है जो कि आपको एक अंदर से जो मेडिटेटिव स्पिरिट है वो आपको बहुत रेफ्यूज देगी बहुत सारे टेंशन्स को, स्ट्रेस को हैंडल करने में. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, द सोर्स कार्ड. You are at this point of time giving importance to yourself. आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपको देना चाहिए. टैरो एडवाइस है. कभी कभी पास्ट आपको खींच के पीछे ले जाता है. पास्ट जब हमें पीछे ले जाता है और अच्छी मेमोरीज़ के साथ हम स्माइल करते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है. बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा या हो रहा है, आपको पास्ट ले जा रहा है, एंड दैट्स वेरी सर्पेंटाइल. Right? So avoid that, just kick away that feeling and stay happy. This is what the cards are advising for you. Now, your predictions for the month. I will just fan the cards for you, dear Taurans. And let's check out what your cards say, dear Taurans. I found the cards for you when I pick up 3 cards for you, dear Taurans, and you have drawn 4 of Pentacles. Wow. Money. Financially, you are strong and you are confident हैं, आप comfortable हैं, right? कोई good news भी आने वाली है, pleasing news आने वाली है. शायद money आपके mind में बहुत important role play कर रहा है at this point of time. So finances are playing a very important time. And your birthday is around, oh wow, lot of confidence you have, right? You've drawn the strength card. Lot of confidence you have, and you're very charismatic at this point of time. आपके अंदर एक special सा charm है. आप convince करेंगे लोगों को, and people will be happily convinced by what you say, dear Tauran. So that is one thing. आपका health अच्छा है मई में, finances अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही गैग्ड फील कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर आप इसको देखें, 8 of Swords cards you've drawn, तो ये this card, just imagine this card is linked with that serpentine card, राइट? तो आपको अपने आप को बंधा हुआ बिल्कुल भी फील नहीं करना है. लिबरेट योर सेल्फ, एंड ऑल इन ऑल अ गुड न्यूज़ इज़ ऑल्सो कमिंग योर वे. कहीं आपको डिनर पे जाना पड़ सकता है और एकदम से कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है, वो आपके फेवर में जाएगा, ऐसा कार्ड्स बोलते हैं. यस, जस्ट इमेजिन द एरोज ऑफ लव. किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, एक अच्छे दोस्त से बहुत ही अनकंडीशनल टॉक हो सकती है. ऑल इन ऑल इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, एंड दैट इज डियर Geminis. और देखते हैं क्या कहते हैं आपके cards, dear Geminis. So first of all, I'm going to fan the Zen cards for you, and later on the cards for prediction. Yeah. So these are the Zen cards, and I'm just shuffling the cards for you, dear Geminis. Yeah. Okay, dear Geminis. Well, pick up 3 cards for you, dear Geminis. Wow, friendliness. That's one card you've drawn. The card of friendliness, right? And it's very simple. This is the direction towards life. You hug a tree and it hugs you back. Nature में जाके time spend करिए. हो सकता है आपको किसी holiday पे जाना पड़ रहा हो, या आप जा रहे हैं, या cards are saying आपको मौका मिल रहा है, definitely जाइए. और माइंड में सुकून रखिए. कोई बड़ी विश ग्रांट होने वाली है आपकी, लेकिन आप पास्ट में बहुत ज़्यादा खिंच के जा रहे हैं. पास्ट आपको अपनी तरफ लेके जा रहा है और आपको सैड भी कर रहा है. बट लाइफ को हमेशा ऐसा सोचिए दैट कार्मिक साइकिल इट गोज़ ऑन, है ना. हमने जो दिया है वो हमें बहुत ही ग्रेसफुली
एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही अंडरस्टैंडिंग आपके कार्ड्स कहते हैं. You should develop that understanding. You cannot blame anyone, because it's the karmic cycle, right? So let's leave. Let's trust God and our good intentions and move ahead. Now, moving on to the next pack of cards, and let's check out what your cards say and what are your predictions. I'll pick up 3 cards for you. Your one card is Ten of Cups. Happiness is there, parties, celebrations, complete family. It's like that. Then, of course, the second card, Knight of Pentacles. A messenger is on way, bringing you some invitations, some monetary support you're going to get. Somebody is going to come and enter your life and is bringing monetary support to you. Maybe your money that was stuck somewhere, you're getting it back, right? As far as your health card is concerned, I believe if you're unwell or something like that, you should consult some good doctor. You need full support, and at this time, you will be needing some financial support also for something. So you will get that support, right? Because you've drawn the 6 of Pentacles as I show you the cards, and you have drawn 8 of Pentacles, right? Your hard work is going to be paid. So what I see, Geminis, is that this month is going to be a good one for you. Monetarily, it's going to be a very nice and happy month, and yes, there are a lot of celebrations. And the only thing is that, don't be sad about things. Develop understanding, right? Because we must empathize with the things happening around us. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ गलत कर जाते हैं किसी के साथ और हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो गलत हमारे साथ होता है तो हमको एहसास होता है. So just take it as the karmic cycle. So rest, you're going to have a wonderful month, Geminis. Moving on to the next sign, and that is my dear Cancerians. And let's check out what your cards say. Now, I'm very careful in fanning my cards because last time when I really fanned and I was just touching them, the table shook. Okay. So, oh my God, this one card, where it has come from. The pack is here. Yeah. So, Cancerians. So, देखते हैं आपके cards क्या कहते हैं, dear Cancerians. Guiding light. What is your guiding light by these cards? Let me shuffle them one more time. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So I'm picking up 3 cards for you. Oh, the card of consciousness, the card of alertness is there. अपने सोल की आवाज़ को सुनिए, किसी को अपने सोल को डोमिनेट नहीं करने दीजिए, right? And don't be miser. Why you have become a miser, right? ऐसा आप क्यों behave कर रहे हैं? Why are you behaving like that? As if you're hoarding money or everything like that. It shouldn't happen. No, not at all. And you're very much suppressed, work pressure, emotional pressures and all. But then a rebirth is there. So allow yourself to take birth again. Get out of this cocoon of suppression. Don't allow anyone, dominate you, and stay alert. That's what the cards, they guide you, dear Cancerians. Now let me take out 3 cards as to what this month predicts for you, dear Cancerians. Dear Cancerians. Yeah. And your 3 cards are card 1, I'll take out for you. Oh, you're feeling, some kind of support, right? And this is also telling that, might be some raise in salary may happen, or time of some prosperity would be there. और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मन में डरने लगते हैं ना, कि हमें अगर पैसे की ज़रूरत हो गई तो ऐसा होगा, तो ऐसे कैसे होगा, कहाँ से आएगा. Don't think all that. That's what the cards are telling you. Have trust in God. Have faith in your work. आपको support, monetary support आपको मिलेगा, divine support मिलेगा, and you should thank your stars for that. And you're working hard for it, so you are going to be paid for your hard work. That's also very nice. And then this is an important letter, document, official letter is also coming your way. And as far as your love life is concerned,
and wow, the high priestess card. So so the card of high priestess, it's telling some mystical powers are going to bless you. Listen to the advice that is coming from someone who carries within a divine light, and in the happiness is there in the family, and your good health and everything. So need not worry about anything. It's going to be it's going to be a great month, and it's all going to be wonderful. Moving on to the next sun sign, and that is dear Leos. And let's check out what your cards say, dear Leos. First of all, I'll give you the tarot guidance, right, as to how you should go about, what are the ways, आपको कैसे तरीके से मई में क्लैरिटी आएगी. आपकी पहली क्लैरिटी आपकी इसलिए आएगी क्योंकि आप कहीं घूम कर आ जाओ, टेक सम छुट्टी. एंड अगर छुट्टी नहीं ले पा रहे हो तो मतलब 4-5 दिन की बाहर नहीं जा पा रहे हो तो टेक अ कैजुअल लीव फॉर सम टाइम. आई नो छुट्टी होने वाली है, बट स्टिल अगर अभी 1-2 दिन आप छुट्टी ले लेते हैं और घर पर यू जस्ट एंजॉय, और यू गो आउट समवेयर, या फिर एक होता है ना कि आप किसी पार्क में ही जाके बैठ जाए शाम को अकेले, एंड यू ट्रैवलिंग डीप इनसाइड एंड ऑल, एंड यू आर हैप्पी. सो इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, यू आर थिंकिंग अ लॉट. एंड आई थिंक जब आप अकेला थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी. थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है. जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, बिकॉज ये पेशेंस के कार्ड्स हैं. क्योंकि जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स वुड हैपन, राइट. एंड बी प्लेफुल. आप एकदम से स्टिफ हो गए हैं, एकदम से आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, डोंट थिंक, जस्ट स्टे प्लेफुल, राइट. सो दीज आर द 3 कार्ड्स, एंड दिस एंड ऑफ कोर्स अपने आप ये कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ करेज. हैव द करेज बिकॉज यू आर द सनफ्लावर एंड यू हैव गॉट द करेज टू फेस द सन. सो दिस इज योर गाइडेंस, डियर Leos, and moving on to your predictions, right? So your predictions, your 3 cards, what they say is here, dear Leos. I'll find the cards for you, and 1 card for you. Your predictions. Wow, the Lovers card is there. A lot of happiness is there. A lot of congeniality is there. A lot of friendship is happening, and then you have drawn the Page of Pentacles, So you're in a position to handle the responsibility, right? And you're thinking of some investments also. लेकिन जो आपके तरफ आपको गाइडेंस देने वाले लोग हैं, वो यंग हैं, वो इमेच्योर हैं. आई वुड से रादर दे आर इमेच्योर. सो बी लिटिल केयरफुल इन दैट. एंड इट्स यू हैव ड्रॉन द कार्ड ऑफ टेम्परेंस ऑल्सो. सो जो इश्यूज हैं रिजॉल्व होंगे, एंड you're testing the waters, you're very careful about it, but happiness is there, and kiss and patch up kind of situation is also there. Something which you are not liking because you've drawn 4 of cups, but at the end the sun card you've drawn, so maybe you attend some celebrations and all, and your health is fine and good. So all in all, a good month, dear Leos, your month of May. And because it's hot, and sun god is also there, so don't crib about the hot weather. Enjoy the cool summers, keeping yourself cool. Enjoy the summers. That's what the card says, dear Leos. Moving on to the next sun sign after Leos, we have dear Virgos. Let's check out what your cards say, dear Virgos. My wonderful people, my Virgos. Would you like to know what's the time? Well, it's 11:15 in the night. Yeah, I'm doing that's what I told you. I just got late, reading the cards, and I just floated the message on FB that they're coming soon. I was just about to read the cards when something happened and I couldn't. So anyways, we have Virgos here for you, your cards and your guidance, right? And this is your guidance, right? Integration, Virgos, balance it. Balance is going to help. So, अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके देखिए, अपने नेचर को, अपने टेम्परामेंट को आप बैलेंस करके देखिए. इट्स रियली हेल्प यू आउट. देन अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. वैसे भी ये साल मैंने बताया अवेयरनेस का है, तो एक अवेयरनेस, नई चीज़ों को समझिए, है ना. जैसे कोई आपको हर्ट करता है तो आप सैड हो जाते, सैड मत होइए, आप अवेयर होइए. आप ये समझिए पर्सन ऐसा ही है, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसे ही करेगी, right? That kind of thing. And then of course rebirth. And जब आप ऐसा करेंगे तो एक rebirth होगा, you'll move out of your cocoon. So this is what your tarots advise, dear
Virgos. And moving on to your predictions, I would also say that if some time kind of guilt is haunting you, then try to save yourself from that. So, what your predictions say, dear cards? And your predictions are, well, I'll take out 3 cards for you, and your cards are the Chariot card. You are the winner, right? So what all you're doing in life, victory comes in many forms. Sometimes it comes in form of peace, happiness, celebration, togetherness, good health. What all you're wanting to happen, it's just happening, and you are the winner, and you have worked hard for it. So it's the card of the Chariot. So some victory news is there, and you are the winner. Then yes, you are the winner. It is supported by this card also, because you have drawn 5 of Swords. जिन लोगों ने आपके सामने बहुत आपको लेट डाउन करने की कोशिश की है, या ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, या अंडरस्टिमेट किया है, दे विल पुट देयर swords down, and योर पर्सनालिटी विल जस्ट जूम अप. सो बेसिकली आई सी कि जो मंथ ऑफ मे है, dear Virgos, it's bringing your persona in. You're projecting your persona, and legal matters, legal documents, justice will happen and will fall in your favor, right? Some legal papers you might have to sign, but be very careful when you're doing that, right? So that's a card of justice, and ये वो भी justice है कि जब आपको हो सकता है मई में आपको किसी इंसान से justice नहीं मिले, हो सकता है, लेकिन आपको divine justice मिलेगा, because that's what the card is saying. So basically I see a good month, because this justice card is also telling about a recuperation of health, तो अगर तबीयत खराब है या थोड़ा सा you're feeling low or weak, so it's going to help you out. So it's all, wonderful month. Moving on to the next sign, and that is dear Librans. Let's check out what your cards say, my dear Librans. And yes, I found the cards for you, my dear Librans. I just found the cards for you, dear Librans. Let's check out what your cards say. I'll pick up 3 cards for you, dear Librans. Okay, my dear Librans. Wow, you are flowering in creativity. तो ये month का जो May month है, just flaunt your creativity. You just exhibit your creativity, and you just explore your creativity. That's going to work wonders. And you've got a very big heart. तो ऐसा क्या हो गया है कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा या मैं भी ऐसा करूँगी? No, you're not like that. Be yourself. Don't be miser. Don't hoard. Just come on, enjoy, right? And then of course balance the situation. Extremity आप avoid करिए, dear Librans. ये आपके कार्ड्स सजेस्ट करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, और आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है, हम आपके लिए 3 कार्ड्स लेंगे, dear Librans. Let's check out what your cards predict for you. My pack of cards, what they predict for you. Yeah. I'll take out 3 cards for you. Queen of Pentacles, you're a queen, right? Wow, you've drawn the World card, dear Librans. So it's money, it's luck, maybe you're flying abroad, world in the palm of your hands, नई opportunities, नए अवसर, नए रोजगार के अवसर, right? कोई अच्छी news, कोई messenger of love is coming to your life. And you also need to have love. When good things are happening around, you need to be confident. You need to be very gracious in accepting it, right? And yes, you have drawn the 3 of Wands, right? So you are like a king or a queen, and the yin and the yang energies, the feminine and the masculine energies, they are just in perfect balance, and it's going to be an amazing month for you, dear Librans. Moving on to the next sign, and that is my dear Scorpios. And let's check out what your cards say, dear Scorpios. जानते हैं क्या कहते हैं आपके cards. In fact, क्या guidance देते हैं? पहले हम guidance जानेंगे cards से. Let's check out what cards say. Okay, I'll draw 3 cards for you. Okay. Change. Take care of your health. Morality, humbleness. And third important card is aloneness, right? तीनों चीज़ें हैं. एक तो change. Accept the change. Change हमारे बॉडी में भी होता है, change हमारे बाहर भी होता है, दोस्तों में होता है. तो इस change को आपको accept करना है, right?
and बहुत ही graciously accept करना है, because change, there's only one thing is just permanent around, and that's a change. दूसरा आपने कार्ड ड्रॉ किया है morality का कार्ड, right? And the morality card says be humble, right? Be humble. हो सकता है कुछ allergies आपको किसी चीज़ों से हो, you know, so stay away from that, right? Try to कि आप बाहर जा रहे हैं तो pollution को avoid करने के लिए मुंह को बांध के जाइए, because that's a card what it is asking you to take some precautions related to your health. Don't eat outside or something, because it might lead to some tummy tummy upset or indigestion or whatever. And aloneness, थोड़ा सा बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो वैसे भी सॉलिट्यूड बहुत पसंद है स्कॉर्पियंस, और आप हर्ट हैं थोड़ा, राइट, अंदर से, बट देन नो वरीज, ये सारी चीज़ें आपको एक न्यू एवतार में दुनिया के आगे फिर से प्रेजेंट करेगी, ऐसा कार्ड्स कहते हैं. आमीन. यू जस्ट नीड टू बी बैलेंस्ड, एंड यू जस्ट नीड टू बी, oh wow, and that's Almighty's blessings are in you, because, and carry your bubbliness and carry your innocence. Now, what your cards predict, dear Scorps? Let me just shuffle the cards for you, my dear Scorpions. Let's check out what your cards predict. And the cards say, okay, Page of Swords. Stay alert, right? You know, some kind of backbiting or gossiping, you know, at your back. Nothing new to you, keeps happening with you. So no worries, just stay alert, and stay alert. You don't get into any kind of politics or something like that. You're straightforward. My God, you have drawn the Tower card. You know, some news can take you, can take you by surprise. Now, things are happening at very quick speed, right? So all these things are there. So these are the times when you need to be very balanced and very calm. You need not to be scared, because this card is going to tell you, oh my God, there's a devil card also. So, you know, you may feel very chained or anything like that. I'll take out one more card. But ultimately, all these things, they're going to lead you to happiness and all, right? So these are the cards. So basically the trouble is coming from the world, you know, low people might trouble you. So, but all in all, this is going to be a wonderful month, because, you know, one card I will draw for you finally towards the end. Yes, because it's a strength card. You have got the strength to face all this. You've got the strength to face. Yeah, we've drawn this card. So health is going to be good, right? Drink lots of water, avoid, you know, getting out, you know, cover your face and all. You'll be very happy emotionally, you'll be, but it will take some time. So जो initial starting है मेगा वो थोड़ा सा challenging रहेगा. You know, shocking things might happen, and they might be flabbergasting. But no worries, all in all, it's going to be a good month, and you're smart enough and brave enough to deal. Moving on to the next sun sign. And that is dear Sagittarius. Let's check out what your cards say, dear Sagittarians. My dear Sagittarians, I will shuffle this pack for you. And then I will just shuffle this for you. My dear Sagittarius. And let's check out what your cards say, dear Sagittarius. Cards of prediction will come later. This is the guidance that's coming your way. Need to be balanced, right? आपको बैलेंस रखना है चीज़ों में, ठीक है? बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं दिखानी है, दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना है. पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हाथ में रोकना भी नहीं है. So it's like that. So kind of a balancing. If you balance the polarities, you know, you'll be able to handle the situations very well in totality. You know, nothing you should try on your own. You know, totality. Partnership, it's going to work. मतलब घर पे भी, you know, now partnership means participation of the people you require. And wow, you've drawn the maturity card. You know, the maturity card, it says a lot of happiness is there, financial happiness is coming, and you know, fulfillment is there, and emotional fulfillment is there, and जो भी आपने सोचा है, you know, that's happening, you know. Or you can say it's a kind of a perfect month. I mean, the perfect month for you, dear Sagis. Now, what your cards predict?
Now, there was a friend, and I was in graduation first year. So he always used to tell me that Rashi, this is your sun sign, you are a Scorpio, and I always used to say that no, I'm a Libran, and he was actually a Sagittarian. So today I'm just reminded of that. That yeah, he was right. I was a Scorpion, and I was not aware of it according to my birth date. Okay, anyways, dear Sagis, what your cards say, what your cards predict. Wow. So अगर आप कोई डील कर रहे हैं, फैमिली प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हैं, कोई आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना वाला है, इनहेरिटेंस से कुछ मिलने वाला है, so definitely you're going to get it. It's time for money and new beginnings, new ventures. If you're planning to start the work that you've worked hard on something, on your venture, on your initiative or anything like that, you're going to be paid for it. It's the right thing that's happening. Some love news is on the way, right? From a friend or relative or anybody who's close to your heart, right? Something speedily is happening your way, and you are running. But one card it's advising, be careful of your things. Be careful. अगर आप कहीं जा रहे हैं or carrying a laptop or the gadgets, so be very careful because this is the card. This is the card. So somebody must be eyeing your thing to grab it. So just be very careful, and it's going to be good. And one more thing, this card is telling you, honesty is the best policy. So be honest. I mean, if you want to put things straight, put it straight instead of going haywire, right? So this was your prediction, dear Sagis. Moving on to the next side, we come to dear Capris, and let's check out what your cards say, dear Capricorns. It's here. I'll just shuffle the cards for you. My dear Capris. Okay, the tarot guidance for you comes through my cards, dear Capris. Yappa. The outsider. ऐसा क्यों आपको लगता है dear Capricorns कि आप outsider हैं, जैसे आप किसी से बात करते हो तो आपको लगता है you're an outsider, that person is an outsider. This feeling is very scary, it never helps you enjoy life. So you are not an outsider, right? You're not an outsider. You've drawn the card of an outsider, so you're not an outsider. That's what the card is telling. Then हो सकता है आप कोई किसी प्रोजेक्ट पर बिजी हो, तो अब आप लेज़ी फील कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है आपने बहुत काम कर लिया और उसका रिजल्ट्स भी आ गया, हार्वेस्ट भी अच्छा हुआ, बट इस गाइस अपन थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप लेज़ी मत होइए. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर प्रेडिक्टिंग, एंड यस, दिस इज द मास्टर कार्ड. यानी कि जो हम आपसे कह रहे हैं वो द मास्टर कार्ड इज टेलिंग दैट इट्स करेक्ट. These are the three things, and believe in your spiritual guru or spiritual leader, whosoever you believe in, right? So this is, let me keep it shuffled for the other sun sign. So that's one. And now your predictions. I'd already shuffled it before. I'll just open the cards for you, dear Capris, and I will pick up 3 cards for you. Oh wow, 4 of Wands. मैंने बताया उस कार्ड से ना कि गुड हार्वेस्ट, अच्छा पैसा आपने बना लिया, मेहनत काम आ गई, प्रोजेक्ट वेंचर फुलफिल हो गए, तो अकम्पलिशमेंट का मंथ है ये, राइट? तो हार्वेस्ट इट्स कमिंग योर वे. एंड द हर्मिट कार्ड, उस कार्ड में भी मास्टर कार्ड आया था और इसमें भी द हर्मिट कार्ड आया है. तो किसी का ब्लेसिंग मिल सकता है, किसी बड़े गुरु का ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं. आप हो सकता है किसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हो, एक एनलाइटनमेंट मोड में हैं आप, कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट गिव इट अ थॉट. हो सकता है किसी की बात सुनने में क्या जाता है, यू कैन गिव सम टाइम टू दैट. एंड बैलेंस का टाइम है, पैसा आ रहा है, 2 सोर्सेज से आ रहा है, आप गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, आप इस पोजिशन में हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, राइट? एंड जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात है, जस्ट इमेजिन द कार्ड ऑफ लव हैज कम. इट इज़ द हेरोफेंट कार्ड एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट strengthening bonds of marriage, and or maybe some good deals with the corporate or something like that. So all in all, a wonderful month, dear Capris. Moving on to the second last sun sign, that is dear, oh my god, should be careful, the camera moves. Yeah, so my dear Aquarius, the second last zodiac sign. Let's check out what your cards predict. In fact, the guidance. I'll pick up 3 cards for you. 1, Thunderbolt card. 2, the healing card.
and 3, the experiencing card. Right, if you see. And this card is telling be careful. Be careful of your health. Don't ignore your health. If you need to visit a doctor, please do. Right? That's one thing which is telling. It's just guiding you. कि अगर हल्का सा भी कोई चीज़ है तो उसको इग्नोर मत करें. दूसरा आपको कह रहा है healing will happen. Right? आपके अंदर healing हो रहा है. ठीक है? तो ये दूसरा कार्ड है आपका और तीसरा कार्ड है आपका experiencing. Right? That is, you are full of warmth and जो आपकी compassion है, इस समय आप एक अच्छे इंसान बन जाइए. है ना, गुस्सा आता है ना, कभी कुछ गलत होता है हमारे साथ तो हमारा हमको लगता है हम उसी कॉइन में पे बैक करें, लेकिन नहीं, थोड़े से अच्छे बन जाइए बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू. दीज आर द टैरो गाइडेंस. दिस इज द टैरो गाइडेंस फॉर यू. मूविंग ऑन टू योर प्रेडिक्शन डियर Aquarians, let's check out what your cards say. Dear Aquarians. Okay, I'll pick up cards for you. King of Swords. थोड़ा सा एंग्री हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं और ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी दैट यू विल जस्ट बिकम स्टिफ. हो सकता है किसी स्टिफ बॉस से मिलना पड़ जाए, स्टिफनेस एक घर में आ रही है तो है ऐसा, थोड़ा सा आप कोल्ड हो जाएंगे, डिमांड करेंगे रिस्पेक्ट. ये थोड़ा सा मंथ ऐसा है यू विल बी लिटिल रूड, आई शुड से दैट. बट ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी भी लेकर आ रहा है. प्रमोशन अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये प्रमोशंस लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छी हेल्थ लेकर आ रहा है ये महीना. राइट? एंड you have got the power, you've got the power to rule, and you have the power to rule. तो दोनों चीज़ें हैं. थोड़ा सा शुरुआत में कुछ चैलेंजेस होंगे that will make you rude, but towards the end there would be stability which is coming. So professionally I believe that this month is going to be a great one. Then love life is going to be amazing because lovers card you've drawn, the friends, the relatives and all the सच्चे वाले दोस्त and प्यार वाले दोस्त, so it's all there. कुछ emotional deceptions हैं. अगर आप किसी पर blindly trust करते हैं तो बिल्कुल नहीं करिए because emotionally deception है. कभी कभी क्या होता है लोग हमारे मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वो हमें खुश करने के चक्कर में हमें एक पल के लिए खुश तो कर देते हैं लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं हमारा. तो ऐसे लोगों से अगर हम अलर्ट रहें तो अच्छा रहेगा. दिस हेल्प्स. ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि इमोशनली आपको डिसीव, इमोशनल अपीवल्स हैं इस महीना. सो एंड लाइक अ फूल with good thought and good heart, you're a fool. Fool means you're God's child. So sorry, God is not going to, he's not going to make you suffer or something like that. He's going to carry you in his hands. So wonderful month all in all, dear Aquarians. And moving on to the last sun sign, that is Pisces. Let me just keep it shuffled, dear Pisces. This is all for you, dear Pisces. So first, the guidance, and then the predictions. Pisces. And your 3 cards, Pisces. Totality. संग में काम करिए. अभी आप जिन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हैं, घर पर हैं, आप बाहर हैं, तो टोटलिटी में काम करिए, ठीक है. एंड इट वुड बी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, राइट. देन ब्यूटिफुल टाइम. आपका हार्ड वर्क, आपकी क्रिएटिविटी, आपका मेंटल पीस आपको बहुत सारा स्ट्रेंथनिंग फोर्स आपकी लाइफ में लाएगा. एंड यू हैव ऑल्सो ड्रॉन द थंडरबोल्ट कार्ड. समथिंग इज गोइंग टू हैपन, which is which would be little flabbergasting or something like that. Very quickly it would be happening. So stay calm and stay good. Stay calm and serene in that situation because the healing, the card of healing has also come. So it's like this. It's like it's all in the positive spirit, dear Pisces. And your card of predictions. I'll just span the cards for you. Wow, dear Pisces, let's check out what your cards say. 7 of Pentacles. You're feeling little frustrated, right? आपको लगता है आपने बहुत सारा काम कर लिया. What new now? What next now? ठीक है, एक फेज है और थोड़ा सा यानी कि स्ट्रेस का टाइम है. तो I think this is the time when
You need to give yourself a break, a little break, right? Then the second card that you have drawn is a Queen of Cups, a very strong feminine influence in your life in the form of a friend, form of mother, in form of sister, who are definitely going to be a healing factor. So at this point of time, I believe your month of May is telling you relax, राइट जो इम्पोर्टेंट काम हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आप करिए प्रोफेशनल फ्रंट पे इट्स ऑल ओके बट देन द इमोशनल एस्पेक्ट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग यू द हीलिंग काम राइट then you in certain situations कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ firm decisions लेने पड़ेंगे you need to be curt and if you'll not be curt you'll not be able to make others understand. So this is the card that you have drawn, right? So this is also one of the cards that you've drawn. And then of course I was waiting for this card, and that is the divine wish granted. So 2 aces you've drawn, 1 and which is very lucrative for business prospects, for money, for happiness and all. So basically it's going to be overall good month, dear Pisceans, because good health is predicted, divine wish granted is predicted. Some frustrations are there, of course, at times it happens, that, oh, what is the meaning of this victory? What is the meaning of all this? Life is empty or something like that kind of feeling. But anyways, so, it's going to be a kind of a mixture of thoughts and emotions, but it is very important because it is going to bring more and more clarity. Rest is going to be a shining month for you, dear Pisceans. So with that, I close. Yes, Anwar, you had asked me to do predictions for these elections 2019. But I'm sorry because election commission it tells that that's the violation of law if any kind of predictions is done through tarot or through astrology or whatever. So I'm sorry for that. It won't be correct. It would be violating the law, and it would be violating the moral code of conduct. So let's wish everybody a great time. Let's have clarity in politics. And that date is coming, and let's vote wisely. Let's vote unbiased and in an unprejudiced way. God bless you. I'll just move. High time. So thank you so much, and God bless you.